special program of prose and poetry for seniors today. Today's program is dedicated specially to our well-renowned Nobel laureate poet our country is extremely proud of, and that is none other than Rabindranath Tagore. I don't think Rabindranath Tagore ji requires any introduction, but yet as a dedication to him, I have prepared a short PowerPoint presentation, which I would like to share with you. Yeah, can you all see this? Yes, ma'am, we can see. All right. So, let me start the slide. Yes. Rabindranath Tagore. Rabindranath Tagore was born on 7th of May 1961 and died in August 1941. He was the most outstanding, prolific Bengali poet and writer in India. And he worked as a poet, writer, playwright, composer, philosopher, social reformer, and a painter. He reshaped Bengali literature and music, as well as Indian art with modernism in the late 19th and early 20th centuries. As a humanist, universalist, internationalist, and ardent critic of nationalism, he denounced the British Raj and advocated independence from Britain. As an exponent of the Bengal Renaissance, he advanced a vast canon that comprised paintings, sketches, and doodles, hundreds of texts, and some 2,000 songs. His legacy also endures in his founding of the Vishwabharati University at Shantiniketan. His novels, stories, songs, dance dramas, and essays spoke of topics both political and personal. Gitanjali, Gora, and Ghare Baire are his best known works. His compositions were chosen by two nations as national anthems, India's Janagana Mana and Bangladesh's Amar Shonar Bangla. The Sri Lankan national anthem also is inspired by his work. Tagore was a prolific composer with around 2,230 songs to his credit. His songs are known as Rabindra Sangeet, Tagore song. Most of his literature, poems or parts of novels, stories, or plays alike were lyricized, influenced by the Thumri style of Hindustani music. At 60, Tagore took up drawing and painting. Successful exhibitions of his many works were held throughout Europe. Few will know that Tagore renounced his knighthood in response to the Jallianwala Bagh massacre in 1919. Author of the profoundly sensitive, fresh and beautiful poetry of Gitanjali, he became in 1913 the first non-European artist, the first lyricist to win the Nobel Prize in Literature. Indian poet, philosopher, and Nobel laureate, Tagore's Gitanjali is translated by himself into English and
made him internationally famous. Gitanjali is a collection of 103 deeply religious and mystical poems which delight, thrill, and uplift us by their noble thoughts and feelings, and which stir and move us by their lyrical qualities. He translated it himself in English, and the foreword was written by none other than W.B. Yeats. I will now read out a couple of his poems from Gitanjali. Pluck this little flower and take it. Delay not. I fear lest it droop and drop into the dust. I may not find a place in thy garland, but honor it with a touch of pain from thy hand and pluck it. I fear lest the day end before I'm aware and the time of offering go by. Though its color be not deep and its smell be faint, use this flower in thy service and pluck it while there is time. The other goes, life of my life, I shall ever try to keep my body pure, knowing that thy living touch is upon all my limbs. I shall ever try to keep all untruths out from my thoughts, knowing that thou art that truth which has kindled the light of reason in my mind. I shall ever try to drive all evils away from my heart and keep my love in flower, knowing that thou hast thy seat in the inmost shrine of my heart. And it shall be my endeavor to reveal thee in my actions, knowing it is thy power gives me strength to act. So these are the two selections of mine from Gitanjali, which is, as you see, a very spiritual offering of his to the Lord. And we know how deeply religious Rabindranath Tagore ji was. With that, I would like to invite Renu Agarwal to give us her selection of a Bengali song that she has selected, which is by Rabindranath Tagore ji. Renu, you're welcome. Namaste to everyone. प्रस्तुत रविंद्र गीत में गुरुदेव ने नायिका के विरह का अत्यंत मार्मिक चित्रण किया है। विरहिणी अपने प्रियतम को मिलन की मधुर स्मृतियों का संदेश भेज रही है कि तुम भूलना मत वो दिन जब हम तुम एक साथ झूले पर, फूलों के झूले पर झूले थे। प्रकृति में हमारे मिलन की सुगंध थी और आकाश में तुम्हारे हंसी की झनकार थी। जब पूनम का चांद धीरे धीरे आकाश में उठ रहा था तो उस महालग्न में मैंने एक प्रणय सूत्र तुम्हारे प्राणों से बांध दिया था। आज मैं एकाकी विरह का भार उठा रही हूं, पर मिलन की उन मधुर स्मृतियों को मेरे प्रियतम तुम भूलना मत, तुम भूलना मत। সেদিন দুজনে দুলেছিল বনে, হলো ডোরে বাঁধা ঝুলনা। সেই স্মৃতিটুকু কভু ক্ষণে ক্ষণে যেন জাগে মনে। ভুলো না, ভুলো না, ভুলো না, ভুলো না সেদিন দুজনে।
সেদিন বাতাসে ছিল তুমি জানো, আমারও মনের প্রলাপ জোড়ানো। সেদিন বাতাসে ছিল তুমি জানো, আমারও মনের প্রলাপ জোড়ানো। আকাশে আকাশে আছিল ছড়ানো, তোমারও হাসির তুলনা। ভুলো না, ভুলো না, ভুলো না, সেদিন দুজনে। পথে যেতে যেতে পূর্ণিমা রাতে চাঁদ উঠেছিল গগনে। দেখা হয়েছিল তোমাতে আমাতে, কি জানি কি মহালগনে। চাঁদ উঠেছিল গগনে। এখন আমার বেলা নাহি আর, বহিব একাকী বিরহের ভার। এখন আমার বেলা নাহি আর, বহিব একাকী বিরহের ভার। বাঁধিনু যে রাখি তোমারে পরাণে, সে রাখি খুলো না, ভুলো না, ভুলো না, ভুলো না, ভুলো না, সেদিন দুজনে। नमस्ते। Very nice. इतनी मधुर आवाज में आप Absolutely beautiful. Absolutely beautiful. या बहुत बहुत Thank you. खूबसूरत। और Thank रविंद्र संगीत का हमें एक झलक दे दिया आपने, बहुत ही खूबसूरत। थैंक यू सो Thank मच। you, thank you, thank you so much. बहुत प्यारा गाया रेनू, बहुत प्यारा। Thank you, thank you. Actually, Bengal and Bangla, it's very close to my heart since I've been brought up. Oh my बहुत dear. मीठा, रसगुल्ला की तरह मीठा। And now next we have, yes, thank you so much. बंगाली में मुझे तो यही have चार a शब्द guest- आते हैं, आमी तुम्हारे भालोबाशी। यही चार शब्द। We now have a very special guest today. She's none other than Dr. Suchitra Kaul Misra. She hails from Kashmir and lives in Bangalore. She's a doctor of philosophy and founder of the Healing Garden. She likes to contribute good energy to the world through creative wellness workshops and laughter therapy. So I would now welcome Suchitra ji to say a few words. Welcome ji. Thank you, Sajni, and a very, very warm namaskar to my fellow seniors. Yes, I'm Dr. Suchitra and I'm a laughter healer in Bangalore. और friends, खुश रहना सरल हो सकता है, लेकिन सरल होना बहुत मुश्किल है। ऐसा गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर कहते थे। और आपने सुना हो शायद अपने एक लेख में, वो बताते हैं कि वो सरलता, that simplicity is the product of hundreds of centuries. Like the blueness of the lake, it reveals depths of truth. And whether it's Tagore the poet, Tagore the storyteller, Tagore the painter, or Tagore the musician, he can balance, intricate complexity with utmost simplicity. I was introduced to Tagore through the morning assembly prayer at my school. उस जमाने में एक ही DPS हुआ था और वो दिल्ली में था, और सप्ताह के हर दिन की प्रेयर अलग होती थी, and Monday was for Tagore.
As we know, he mostly wrote in Bengali and reshaped Bengali literature, but this poem was penned by himself in English, and it's among those in Gitanjali. It's in fact the 35th poem in Gitanjali, which won him the Nobel Prize for Literature. और मैं छोटी सी थी, पर जब मैं कहती थी assembly में, where the mind is without fear and the head is held high, तो अपने आप सर ऊंचा हो जाता था और लगता था कि डर नाम की तो कोई चीज है ही नहीं. You know, these simple lines produced probably and could solve the solutions. They gave us the solution for the entire problems in life for all of us as human beings. Because our minds are actually constantly in fear of something or the other. And most of these fears are invisible fences that we or our environments create in our mind. And then those fears channelize our actions throughout our life. Where knowledge is free, where the world has not been broken up into fragments by narrow domestic walls. Yeah, Tagore is dreaming, and he's making us dream of an ideal world, a vision that unites humanity, where words come out from the depths of truth, where tireless striving stretches its arms towards perfection. Isn't that the most important kind of freedom? When you can be what you really are, and you keep stretching and bettering yourself, where the clear stream of reason has not lost its way into the dreary desert sand of dead habit. Yes, reason is needed, but no need to overthink. We've got to be vigilant. अच्छा है दिल के साथ रहे पास बाने अकल, लेकिन कभी कभी इसे तन्हा भी छोड़ दे. Where the mind is led forward by thee into ever-widening thought and action. Freedom, after all, is an idea, and it has to go with a sense of responsibility. In action, it has to be led with responsibility, and only then we can grow with it. Into that heaven of freedom, my father let my country awake. I wonder sometimes why he called out to father and not mother. We generally refer to our country as motherland. But my take is that he was echoing the human longing to have a father figure, a very just father figure for the heaven on earth which he dreamed of. Tagore, of course, wrote it inspiring the country to wake up while he himself was dreaming and yearning for independence one day. And today, we are fortunate to celebrate our Azadi Ka Amrit Mahotsav. And still, this poem remains as powerful. And though I understand it much more now, it awakens and enthralls me as much as it did when I was a little girl, which is why I think it is ageless. Friends, it takes a genius to convey complex ideas in a simple way that can become ageless, timeless. And I think Gurudev Tagore's entire body of work is ageless and timeless. And that's why he will always be for me simple and sublime. Thank you, Sajni, Nalini, and fellow seniors for this opportunity to remember, share, and explore Tagore. Once again, namaskar and thank you. Absolutely enthralling, Suchitraji. Absolutely enthralling. Thank you so Absolutely much, wonderful. Suchitraji, for your short but sweet introduction into what really inspired you about Tagore. And we also know that Tagore's poem, Where the Mind is Without Fear, is one of the most inspiring poems one can ever read. And I know also that one of our participants, Mr. Narendra Chawla, is going to read that poem in Hindi. Jahan man dar se pare ho. Narendra ji, aapki poetry, please sunaiye. Unmute कीजिए अपने आप को. Unmute yourself, please. Yes, we can hear you now. No, is it okay? Yes, please. We would love to hear your poem. Thank you very much. Man jahan dar se pare ho.
थैंक यू वेरी मच। सजनी दीदी को नमस्कार, और सभी नीरन जी और सुचित्रा जी और अभी जो आई थी, कई बार हम नाम भूल जाते हैं, सभी आपके द्वारा जो भी कार्यक्रम में आते हैं, एक से एक बढ़कर के सुगंधित फूल होते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आपका कार्यक्रम आरंभ होता है, उससे पहले ही हम उसमें खो जाते हैं, कुछ दिन पहले ही। तो आज जो गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती के उपलक्ष्य में आपने कार्यक्रम किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। ये जो मैंने सेलेक्ट की है, ये इनकी एक रचना मन जहां डर से परे है। ये सुनाने से पहले मैं इस यज्ञ में कुछ 2-4 पंक्तियों की अपनी ओर से आहुति यदि ना दूं तो फिर हमारे लिखने का क्या फायदा। तो मैंने ज्यादा नहीं लिखा, सिर्फ 2-4 पंक्तियों में लिखा है। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जिनकी रचनाओं में झलकती है भारत में आने वाली स्वर्णिम भोर। एशिया के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता, जिन पर तथा उनकी गीतांजलि पर प्रत्येक भारतीय को है गर्व, उनकी जयंती देश भर में मनाई जानी चाहिए जैसे एक पर्व। अभी भी मैं संतुष्ट नहीं हूं, ये और भी जोर शोर से मनाई जानी चाहिए। मैं ये चाहता हूं, एक वरिष्ठ नागरिक की ये पुकार है, क्योंकि कुछ चीजें जो है, हम केवल इसी से संतुष्ट नहीं है कि हर संस्था में या कॉलेज में या स्कूल के अंदर गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की एक तरफ चित्र लगा दिया जाए, लेकिन उनकी जयंती हमने 40-45 साल मैंने पढ़ाया, मैंने कभी भी इतना बढ़िया प्रोग्राम जैसे आज आप कर रहे हैं कोई नहीं देखा अपने जीवन में। राजधानी दिल्ली में, उत्तर प्रदेश में, जहां गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का जोर शोर से उनकी जयंती मनाई गई, ये हमारी ही त्रुटि है। हम अपनी ही त्रुटि कहेंगे, किसी सरकार की नहीं कहेंगे। तो इसके बारे में मैंने ये लिखा कि एशिया के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता, जिन पर व उनकी गीतांजलि पर प्रत्येक भारतीय को है गर्व, उनकी जयंती देश भर में विशाल स्तर पर मनाई जानी चाहिए जैसे एक पर्व। वास्तव में बंगाल में चमके प्रारंभ से ही ऐसे प्रतिष्ठित लेखक, कवि, राष्ट्रनेता, अनेकों राष्ट्रनेता हुए हैं, कवि हुए हैं। अब अगर उनके हम नाम लिखें तो हमारा समय इसी में ही सब लग जाएगा। अनेक राष्ट्रनेता जिनका नाम आज भी इतिहास गर्व से है लेता। गुरुदेव का लिखा हुआ जन गण मन राष्ट्रगान आदर से बना है आज भारत, श्रीलंका और बांग्लादेश की शान। नरेंद्र जी, टाइम थोड़ा शॉर्ट है, प्लीज। बस मैं और कुछ नहीं, अब तो मैं कविता ही बोल रहा हूँ। जी जी जी। हमें हिंदी आती है या इंग्लिश आती है या उर्दू थोड़ी बहुत समझते हैं। बंगाल की तो भाषा में हमें सिर्फ जो अभी नीरम बोल रहे थे, नीरम के आमी तुम्हें भालो भाषे, एक तो ये शब्द आता है, एक वो ला 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 वो शादी में बोलते हैं वो, इसके अतिरिक्त हमें कुछ नहीं आता। मैं समय और खराब ना करते हुए बोल रहा हूं। मन जहां डर से परे है, मन जहां डर से परे है, सिर जहां ऊंचा है। ये मैंने अपने कॉलेज में ये पढ़ाई थी, इंग्लिश की पोएम, जिसकी एक लाइन मुझे याद आती है, वेयर द माइंड इज फ्री फ्रॉम फियर एंड द हेड इज हेल्ड हाई। ये उसी का रूपांतर है। ज्ञान जहां मुक्त है और दुनिया को संकीर्ण दीवारों से छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा नहीं गया हो, जहां शब्द सत्य की गहराइयों से निकलते हैं, जहां थकी हुई प्रसार रत बाहें
त्रुटिहीनता की तलाश में हैं, जहां कारण की स्पष्ट धारा है, जो सुनसान रेतीले मृत आदत के वीराने में अपना रास्ता खो नहीं चुकी है, जहां मन हमेशा व्यापक होते विचारों और सक्रियता में तुम्हारे प्रति आगे चलता है और आजादी के स्वर्ग में पहुंच जाता है। ओ पिता परमेश्वर, मेरे देश को जागृत बना, मेरे देश को जागृत बना। बस यही मेरी आहुति है आपके कार्यक्रम में। आशा करता हूं समर्थन मिलेगा, पसंद आएगी। धन्यवाद। थैंक यू सो मच नरेंद्र जी। हिंदी में आपने ये कविता पढ़ी। हम सभी ने अंग्रेजी में तो पढ़ी होगी, लेकिन हिंदी का भी स्वाद ले लिया हमने। मैं अब रिक्वेस्ट करूंगी ज्योति कालरा से कि वो अपनी सिलेक्शन पढ़ें। ज्योति कालरा, आर यू रेडी विथ योर सिलेक्शन? If she is not responding, can I request Anjali Saraswat ji? Anjali Sharma, please आप अपनी सिलेक्शन पढ़ें। थैंक यू सो मच सजनी जी। बहुत अच्छा सब लोग बोल रहे हैं, अभी बहुत अच्छा लगा और इतना परिचय दे दिया गया है उनके बारे में कि बहुत ज्यादा बोलने की आवश्यकता शायद नहीं है इस समय। तो मैंने उनकी एक कविता जो चूज की है वो है उनकी जो गीतांजलि पुस्तक थी उसमें से ही एक चुनी हुई कविता है। और हम सब जानते हैं कि गीतांजलि के लिए उनको नोबेल पुरस्कार मिला था। तो उन्हीं की एक कविता पढ़ रही हूँ। उसमें उन्होंने कुछ ऐसा वर्णन किया है कि जो लोग हमसे मिलते हैं उनके बारे में लिखा है। हम लोग नए नए लोगों से मिलते हैं तो वो क्या रिएक्ट करते हैं उस चीज को, उसके लिए लिखा है उन्होंने। अनजानों से भी करवाया है परिचय मेरा तुमने, अनजानों से भी करवाया है परिचय मेरा तुमने, जाने कितने आवासों में, जाने कितने आवासों में छाँव मुझे दिलवाया है। तो कई जगह रहे हैं वो, अलग अलग जगहों पे। दूरस्थों को भी करवाया है, दूरस्थों को भी करवाया है स्वजन समीपस्थ तुमने, स्वजन समीपस्थ तुमने भाई बनवाए हैं मेरे अन्यों को जाने कितने, मेरे अन्यों को जाने कितने। और छोड़ पुरातन, जब किसी नए से मिलते हैं तो नेचुरली पिछला वाला छोड़ते हैं हम लोग। तो छोड़ पुरातन वास कहीं जब जाता हूं मैं, छोड़ पुरातन वास कहीं जब जाता हूं मैं, क्या जाने क्या होगा सोचा करता हूं मैं। क्या जाने, जब किसी अजनबी से मिलते हैं तो ऐसा फीलिंग्स आती है, तो वही उन्होंने व्यक्त किए। क्या जाने क्या होगा सोचा करता हूं मैं, और नूतन बीच पुरातन हो तुम, नूतन बीच पुरातन हो तुम, भूल इसे मैं जाता हूं। और दूरस्थों को भी करवाया है स्वजन समीपस्थ तुमने, स्वजन समीपस्थ तुमने। और जीवन और मरण में होगा, जीवन और मरण में होगा अखिल भुवन में जब वो भी, तुम्हें जानने पर, नहीं सॉरी, जीवन और मरण में होगा अखिल भुवन में जब वो भी, जन्म जन्म का परिचित चिन्ह, जन्म जन्म का परिचित चिन्ह होंगे उन सबको तुम भी, तुम्हें जानने पर न पराया होगा कोई भी, तुम्हें जानने पर पराया होगा न पराया होगा कोई भी। नहीं वर्जना होगी, नहीं वर्जना होगी, और न भय ही कोई भी, और न भय ही कोई भी। जानते हो तुम मिला सभी को, जानते हो तुम मिला सभी को, ताकि दिखो सब में ही, ताकि दिखो सब में ही। और दूरस्थों को भी करवाया है स्वजन समीपस्थ तुमने। ये ईश्वर की वंदना है एक तरीके से, कि वो ईश्वर को कहते हैं कि हमको तुमने मिलवाया है सब लोगों से और इतना समीप कर दिया है, और तुमको मैं ना भूल जाऊं, ये बहुत जरूरी है बीच में। थैंक यू। Excellent. Excellent. Very nice. Very nice. Any poem is best heard or felt
when it is read or sung in its original language. और जी, जी, रविंद्रनाथ जी जी। की भी कविताएं जो हैं और गीत जो हैं, अगर जब हम बंगाली में सुनते हैं तो उसका जो असर है वो तो क्या कहें। तो मैं आई रिक्वेस्ट डॉक्टर दुर्जॉय शोम, जो आज हमारे बीच हैं, टू प्रेजेंट हिज song or poem or his selection of Tagore, and I'm sure he will do it most probably in Bengali itself. Dr. Shom, are you there? We cannot see you. Hanji. Thank you. Thank you. Welcome, Dr. Shom. Yeah. We have visitors here, so but I couldn't, give up this opportunity of with celebrating Tagore with all of you. So much of the fabric of what Tagore wrote, his writings, was woven with the thread of the philosophy of the Upanishads. The Upanishads, these themes run through and through all his creations. And you know that he wrote very profusely, and in every kind of genre, novels, stage plays, songs, everything. But very famously, the poet said himself that even if the world forgets the entire body of my work, my songs will live on. This is what he himself said. And he composed so many of them. Sajni ji said, more than 2,000 of these songs, and they're divided into categories. Like these are small booklets in themselves, such as Puja, Prem, Prakriti, Swadesh, and so on. So, in fact, his songs from, Puja form, part of socio-religious ceremonies that are conducted by, we have a sect called the Brahmo sect. And, Tagore and his family were, part of the Brahmo sect. And, his songs even today, they are sung in weddings, at the time of people passing away, in all of these formal occasions. So now, with your permission, I will just, try to give you a glimpse of, a song that he wrote. I've not been singing for some time, so you'll have to forgive my transgressions of, notes. But to Bengalis, he's also known as the poet of the monsoons. And many of his songs, which are based on the monsoons, give us a very vivid picture of, this season in Bengal. So the song that I will sing for you, it tries to capture the mystery of, gathering dark monsoon clouds when the thunder roars and the lightning strikes, and it's like the sound of the damaru, and, the earth is drenched finally by, the showers of the monsoon. This was composed in Raga Malhar. So, let me sing this song for you. হৃদয়ে মন্দ্রিল ডমরু গুরু গুরু, হৃদয়ে মন্দ্রিল ডমরু গুরু গুরু, ঘন মেঘের ভুরু কুটিল কুঞ্চিত, হলো রোমাঞ্চিত বন বনান্তরে, দুলিল চঞ্চল বক্ষ হিন্দোলে, মিলন স্বপ্নে সে কোন তিথিরে, হৃদয়ে মন্দ্রিল ডমরু গুরু গুরু, ঘন মেঘের ভুরু কুটিল কুঞ্চিত, হলো রোমাঞ্চিত বন বনান্তরে, দুলিল চঞ্চল বক্ষ হিন্দোলে, মিলন স্বপ্নে সে কোন তিথিরে, হৃদয়ে মন্দ্রিল ডমরু গুরু গুরু।
সঘন বর্ষণ শব্দ মুখরিত, সঘন বর্ষণ শব্দ মুখরিত, বজ্র সচকিত ত্রস্ত সর্বরে, সঘন বর্ষণ শব্দ মুখরিত, সঘন বর্ষণ শব্দ মুখরিত, বজ্র সচকিত ত্রস্ত সর্বরে, মালতী বল্লরে কাঁপায় পল্লব করুণ কল্লোলে, কানন শঙ্কিত ঝিল্লি ঝঙ্কৃত, হৃদয়ে মন্দ্রিল ডমরু গুরু গুরু, ঘন মেঘের ভুরু কুটিল কুঞ্চিত, হলো রোমাঞ্চিত বন বনান্তর, দুলিল চঞ্চল বক্ষ হিন্দলে, মিলন স্বপ্নে সে কোন তিথিরে, হৃদয়ে মন্দ্রিল ডমরু গুরু গুরু। Thank you so much, Dr. Shoma. I know how busy you are, but you accepted my